Hello students, good morning to all of you. So here I am going to discuss the Ncert exercise of class 11 chapter 4 motion in plane. So let's start with the first question there. State for which of the following physical quantities if it is a scalar or a vector. So volume is basically a scalar, mass is a scalar quantity, speed is a scalar quantity, acceleration is a vector quantity, density is a scalar quantity, number of moles is also a scalar quantity, velocity is a vector, and your angular frequency is also your scalar quantity, and displacement is a vector quantity, and angular velocity is also a vector quantity. So these are the vector quantities and these are the scalar quantities as solved in the problem. So now let's come to the second question there. Pick out the two scalar quantities in the following list. So as you all know that work is a scalar quantity, so this is one of the scalar quantity here, and that force is a vector quantity. Students, angular momentum is also a vector quantity. Current is also a scalar quantity. So current is also scalar quantity. Current has a magnitude as well as direction, but it is not following the vector algebra there. So linear momentum is also vector, electric field vector, average velocity is also vector quantity, magnetic moment, relative velocity, all are the vector quantities. So work and current are the scalar quantities in the following list. So let's come to the third question. Pick out the only vector quantity in the following list. So यहाँ पर कोई एक vector quantity है. Temperature is a scalar, pressure is a scalar, and that impulse is basically a vector quantity. Impulse is basically vector quantity. Time is a scalar, power is also a scalar, path length यानी कि distance is also a scalar, energy, gravitation, potential, coefficient of friction, mu, charge, all these are the scalar quantities. Only vector here is impulse. Let's come to the fourth question. State with reasons whether the following algebraic operations with scalar and vector are meaningful or not. So let's start with the first question there. Adding any two scalars. So this operation, like first operation, is not possible. So पहले का आंसर नो है, because we cannot add any of the two scalars. For example, मुझे कोई कहते हैं कि velocity like speed में आप distance को add कर दो. So I cannot add the speed with distance. This is not possible. So any two scalars को हम add नहीं कर सकते हैं. We can add any two scalars, but means we can add any scalars if they have same dimensions. मीन्स मैं स्पीड के साथ स्पीड को ही ऐड कर सकता हूँ, ऐसे किसी भी हर किसी स्केलर को किसी भी स्केलर के साथ ऐड नहीं किया सकता. फर्स्ट इज नॉट द पॉसिबल देयर. सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. एडिंग अ स्केलर टू अ वेक्टर ऑफ द सेम डायमेंशन, ऑब्वियसली नॉट. लाइक मैं अगर स्पीड की बात करता हूँ कि मुझे स्पीड में मैंने ऐड कर दिया स्पीड प्लस वेलोसिटी कर दिया. सो वेलोसिटी और स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला तो सेम है, सेम डायमेंशंस दे हैव, बट वी कैन नॉट ऐड लाइक दैट. सो एनी लाइक एडिंग अ स्केलर टू वेक्टर इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल. सो दूसरे का आंसर भी क्या है, नो है. हम किसी स्केलर को वेक्टर के साथ ऐड नहीं कर सकते हैं. तीसरा है मल्टीप्लाइंग एनी वेक्टर by any scalar. Yes, this operation is correct. This will give us a useful result there. Multiplying any vector by a scalar. Like हम force की बात कर लेते हैं. Force is basically mass into acceleration. So mass is a scalar quantity. Acceleration is a vector. So it is giving us a useful quantity. Force is a vector. So we can multiply any vector by any scalar. So तीसरा जो process है, तीसरा जो क्वेश्चन है उसमें yes वो ऑपरेशन पॉसिबल है, मीनिंगफुल है. Multiplying any two scalars, like can we multiply any two scalars? Yes, we can multiply any two scalars. That will also give us a useful result. We can multiply any two scalars. तो चौथे का जो आंसर है वो भी हम yes लिखेंगे. ई है एडिंग एनी टू वेक्टर्स. अगेन नॉट, वी कैन नॉट ऐड एनी टू वेक्टर्स. हम किसी भी दो वेक्टर को ऐड नहीं कर सकते हैं. लाइक अगर कोई कहता है कि वेलोसिटी में आप डिस्प्लेसमेंट को ऐड कर दो, सो दिस इज नॉट गिविंग अ यूजफुल रिजल्ट. सो इसका आंसर भी नो हो जाएगा. एफ है एडिंग अ कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर टू द सेम वेक्टर. सो लाइक अगर मैं फोर्स, मेरे पास कोई वेक्टर है, मैं उसके साथ उसका कोई कंपोनेंट ऐड कर सकता हूँ. तो फोर्स के साथ अगर मैं कंपोनेंट ऑफ एफ को ऐड करता हूँ, सो दैट इज पॉसिबल, दैट इज मीनिंगफुल, बिकॉज जो कंपोनेंट होगा दैट इज ऑल्सो ऑफ सेम डायमेंशंस. बस उसका जो डायरेक्शन वगैरह है वो डिफरेंट रहेगा, बट वी कैन ऐड दैट यूजिंग द वेक्टर अलजेब्रा. सो एडिंग अ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर टू द सेम वेक्टर मीन्स दैट कंपोनेंट इज हैविंग द सेम डायमेंशंस देयर. तो उन दोनों को, दोनों एक ही बात, एक ही मीनिंग रहेगा उनका, वो एक ही फिजिकल क्वांटिटी रहेगी. अगर मैं फोर्स के कंपोनेंट की बात करता हूँ तो फोर्स का कंपोनेंट फोर्स ही होगा. सो बोथ आर द सेम फिजिकल क्वांटिटीज, सेम डायमेंशन देयर. सो एडिंग अ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर टू द सेम वेक्टर इज पॉसिबल. थैंक यू.